We are live now. Give me 1 minute. All right. Namaste everyone. Welcome to Hindi University. Really excited to have all of you on this Sunday. As you know, my name is Ashutosh, and as you know, we meet every Sunday 8 a.m. US Pacific time, which is time on the west coast of the US. For those of you who are new to Hindi University, you can learn more about us by going to our YouTube channel, which is youtube.com/Hindi University. Or you can also go to our website, which is hindiuniversity.org, to learn about Hindi University and when we meet, how we meet, the different community groups that we have and the classes that we have throughout the week, the books that we've been following. Okay, and that way you can immerse yourself into the community and connect with us. As you know, today is a special session. We are welcoming Professor Naresh Sharma, who is a Hindi professor at the SOAS University of London. Professor Naresh will be sort of giving us insight throughout this session today, and you're all welcome to ask any questions you have with Professor Naresh. Okay, so with that in mind, I'm gonna have one of our amazing Hindi University student give a small introduction of Professor Naresh. So over to you, Sheila ji. You have to unmute yourself. नमस्ते दोस्त शीला है मुझे प्रोफेसर नरेश शर्मा के परिचय करते हुए बहुत खुशी हो रही है प्रोफेसर शर्मा 15 साल तक SOAS School of Oriental and African Studies London University में हिंदी शिक्षक है और उनके पास Birkbeck, it's another part of London University, language teaching MA है लेकिन पहले ही प्रोफेसर शर्मा IT इंडस्ट्री में काम करते हुए 10 साल बिताए वहाँ हिंदी ट्यूटर हिंदी इंटरमीडिएट रीडर किताबों की लेखक है मैं समझती हूँ कि वहाँ एक बार फिर प्रोफेसर बाटिया के साथ एक नया किताब लिख रहे हैं Rutledge प्रकाशन से Surprising facts. Punjabi भी शिक्षक है और आजकल जापानी सीख रहे हैं Naresh ji, konnichiwa, irishimasu, Hindi University, swagat hai. Awesome. Thank you so much, Sheila ji, for introducing, Professor Naresh. Professor Naresh, really excited to welcome you with everyone, and looking forward to our interaction. So thank you so much for joining us. So we'll start with people have a lot of questions. They've shared a lot of questions with me. It'll be great if you can talk a little bit about how it all started with you. Like आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी हिंदी की जर्नी कैसे शुरू हुई. आप दोनों भाषाओं में बोल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश. स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग लेवल के हैं, कुछ जो हैं एकदम बिगिनर्स हैं, कुछ बहुत एडवांस्ड हैं. तो they will all be excited to hear from you. जी नमस्कार सबको और शीला जी बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचय देने के लिए. आपको भी konnichiwa और हाँ आशुतोष जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, आपसे बात करने का, पूरी कम्युनिटी से बात करने की. और हाँ ये सवाल जो आपने पूछा कि मेरी ये हिंदी की यात्रा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये तो काफ़ी लंबी कहानी है मैं सोचता हूँ. तो बचपन में शुरू हुई. तो वैसे मैं घर पे हम पंजाबी और इंग्लिश बोलते थे, तो हिंदी बाद में मैंने सीखी. So grew up bilingual English Punjabi speaking. और जब आप एक दूसरी भारतीय भाषा जानते हैं जो हिंदी से मिलती जुलती है, तो आपको हिंदी समझ में आने लग जाती है exposure के साथ. So I was exposed to Hindi through films predominantly and songs. And मेरे parents फिल्में देखते थे, गाने सुनते थे. और फिर actually ऐसा हुआ, मेरा अगर मैं
उससे पहले जब मेरा जन्म हुआ था युगांडा में, ईस्ट अफ्रीका। सो हमारे जो जैसे मेरे दादा दादी वगैरह वो माइग्रेट हुए थे पंजाब से, चंडीगढ़ के आसपास से। तो वो केन्या चले गए थे, और उसके बाद मेरा फादर का भी जन्म उधर ही हुआ था। मेरे माता पिता नायरोबी में मिले, उनकी शादी वहां पे हुई, और फिर मेरा जन्म युगांडा में हुआ था। और मेरी मदर थी जिन्होंने ये एक जैसे नियम बनाया था, एक रूल घर में के पंजाबी ही बोलनी है। सो रियली थैंक्स टू हर। आज मदर्स डे है यहाँ यूके में, तो मैं अपनी माता जी को मदर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और उनका उनको धन्यवाद धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मैंने पंजाबी बोलना सीखा। और तो फिर कुछ साल बाद हम नाइजीरिया चले गए थे, यूके आ गए थे, फिर नाइजीरिया चले गए थे। और वहाँ पे एक काफ़ी जैसे एक्सपैट इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी था। ज़्यादातर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स। मेरे फादर इंजीनियर थे, तो वो वहाँ पे काम कर रहे थे। वहाँ काफ़ी साउथ एशियन कम्युनिटी थी, तो हम एक साथ सोशलाइज करते थे, घरों में डिनर्स होते थे वगैरह। और सब बच्चे आपस में हिंदी और इंग्लिश बोलते थे, और मैं इंग्लिश ही बोलता था, लेकिन हिंदी समझ आ जाती थी। So that was the situation. I was surrounded by a lot of Hindi and I could understand it, but I didn't really speak it. और एक दिन किसी बच्चे ने मुझे कहा कि आपको हिंदी नहीं आती, आपको नहीं, तुम्हें हिंदी नहीं आती, क्यों कभी सुना नहीं है बोलते हुए? मैंने कहा क्यों नहीं, मैं बोल सकता हूँ। और उन्होंने कहा कुछ कहो, हिंदी में बात करो। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जो मेरे मुंह से निकला वो पंजाबी थी। तो बच्चे हंसने लगे। मैंने सोचा ये क्यों हंस रहे हैं? फिर एक जैसे आप कह सकते हैं एक लाइट बल्ब मोमेंट हुआ। मैं शायद 8 साल का था कि अरे ये तो एक अलग भाषा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये तो इंडियन भाषाएं थीं। मैं बोलता हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि ये एक अलग भाषा है, हिंदी और पंजाबी। तो उसके बाद मैंने कुछ कोशिश की सुनने की, बोलने की, और तब से ही मेरी शायद दिलचस्पी भाषाओं में शुरू हुई थी। So yeah, that's back in childhood. And then we watched a lot of films. We used to get these big video cassettes. So this is, mid to late 70s, these video cassettes used to come. We used to watch these films. So I was exposed to a lot of Hindi through films. और मुझे याद है ये film titles जो थे, इनसे मैंने बहुत शब्द सीखे. So I didn't realize until later that some of those film titles like Lahu ke do rang, Farishta ya Katil, Anurod, these type of words, they sort of must have gone in somewhere, and it wasn't till much later that I was like, oh, I know that word, I've heard that word. And so ये है जब बच्चा भाषा सीखता है, you sort of absorb things. And but then later on, I got interested in Hindi at around maybe my sort of teenage years. I got exposed to Ramcharitmanas. तो यहाँ लंदन में हमारे इलाके में ये रामचरितमानस की कथाएं हो रही थी। तो ये शायद लेट 80s की बात है। तो मैं काफी उससे प्रभावित हुआ था, और एक कथावाचक थे जो यहाँ आते थे, यूके से ही थे, और वो काफी जवान थे, शायद वो 20s या 30s में थे। वो जैसे अगर आप स्टेरियोटिपिकल कथावाचक को देखे, ओल्डर गुरु टाइप, तो ये वैसे नहीं थे, काफी ज्यादा रिलेटेबल थे। तो काफी इंटरेस्ट हो गई थी मुझे रामचरितमानस में। तो फिर मेरा ये मन कर रहा था कि मैं जो रामचरितमानस हूँ उसको मैं पढूं, लेकिन जो असली ओरिजिनल अवधि में। और फिर मैंने यूनिवर्सिटी में सोएस में दाखिला लिया। मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन सोएस है जहां आप हिंदी पढ़ सकते हैं, और मैं वहां गया। और सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई रूपर्ट स्नेल जी के साथ। वो वहाँ
लेक्चरर थे और उनके साथ थे साइमन वेटमैन, हम्म, प्रोफेसर साइमन वेटमैन। तो उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे एडमिशन दिया और फिर मैं हिंदी फॉर्मली सीखने लगा। हम्म, अम, लेकिन उससे पहले मुझे याद है मैंने स्क्रिप्ट, हिंदी लिपि खुद सीखने की कोशिश की थी। और एक किताब थी हमारे घर पे थी, पता नहीं वो वहाँ क्यों थी, मोहिनी राव टीच हम्म, योरसेल्फ हिंदी, बहुत हम्म, पुरानी किताब है। तो उससे मैंने क ख घ घ वगैरह सीखा। सीखा। हम्म, So that's the kind of like, background to the Hindi learning journey, I suppose, that I, embarked upon. And फिर जब पढ़ाने की बात, अगर मैं उस पर आऊं, तो वो भी यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुआ था, क्योंकि प्रोफेसर साइमन वेटमैन, उनके पास एक इंक्वायरी आई थी। एक एक लेखिका थी यहाँ लंदन में, और उसका हस्बैंड, उसका पति भारतीय था, भारत में ही था, और उनकी बेटी हिंदी सीखना चाहती थी। वो सीख नहीं उसने सीखा नहीं था जब वो छोटी थी, अब वो शायद 16 साल की थी, उसका मन कर रहा था हिंदी सीखने का। तो साइमन वेटमैन जी ने मुझे कहा, तुम जाके इस लड़की को हिंदी पढ़ाओ। मैंने हम्म, कहा, मैंने कभी हिंदी पढ़ाई नहीं। उसने कहा, कोई बात नहीं, ये टीच योरसेल्फ हिंदी की किताब ले लो, स्नेल एंड वेटमैन की, जो कंप्लीट हिंदी से पहले वो एडिशन होता था, और इसको ही फॉलो करके उसको पढ़ाओ। तो फिर मुझे हिंदी व्याकरण सीखना पड़ा, क्योंकि हम्म, मैं उससे पढ़ा रहा था। तो उससे पढ़ाने से पहले, I had to learn the grammar before I could teach it. So yes. yeah, that's going back to when I was doing my BA, maybe early 90s when I first started Hindi teaching, and then Amazing. This is really mm, amazing to hear from you. And आपने दो तीन चीजें बोली जो कि I'm sure all the HU community can relate to. First, you mentioned about light bulb moment, which your own professor, when Rupert Snell came, to talk to Hindi University, he mentioned the same thing. You also mentioned about being surrounded by the language speaking people. So जैसे आपने बोला कि अगर आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं, चाहे आप पंजाबी सीखना चाहें या हिंदी सीखना चाहें या इंग्लिश, या जो भाषा सीखना चाहें, अगर आप इफ आर सराउंडेड बाय पीपल हु आर टॉकिंग दैट लैंग्वेज, इट मेक्स योर जर्नी मच इजियर, राइट? आपने खुद भी बताया कि आप खुद एक सेल्फ मोटिवेटेड थे, लाइक देयर वाज नो फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, राइट? अगर आपको लगा कि नहीं मुझे खुद को सीखना है, तो आपने जो किताब थी, रिसोर्सेज अवेलेबल थे, आपने वहीं से शुरुआत करके चालू किया पढ़ना। और फिर आपका खुद रिसोर्सेज आपको अपने आप एक डायरेक्शन मिलती गई। जैसे आपने बताया कि आप एक कथावाचक को सुन रहे थे, तो उससे आपको थोड़ी और इंस्पिरेशन मिली और आपको था कि नहीं मुझे एक एक गोल है जो परसू करना है। लाइक तो आई एम श्योर जो जितने भी हिंदी एच यू कम्युनिटी के और बाकी के भी जो भाषा सीखने वाले हैं, दे कैन रिलेट टू इट दैट यू हैव टू हैव अ गोल। अगर आपके पास एक गोल होगा तो दैट जर्नी विल बिकम मच इजियर, राइट? चाहे आपकी फॉर्मल जो हिंदी की क्लासेस थी वो जब आप, तो आपने बीए करते वक्त ही आपकी दैट वाज द फर्स्ट फॉर्मल क्लास, प्रोफेसर नरेश, या आपने उससे पहले भी और भी क्लासेस ली थी, या उससे पहले आप सेल्फ मोटिवेटेड ही थे? उससे पहले मैंने हिंदी की कोई फॉर्मल क्लास नहीं ली थी। So yeah, you're right. Those points that you picked up on, motivation and goal, those are, very important किसी भी student के लिए. So हाँ, वैसा ही था। कोई formal classes नहीं थे उससे पहले। um, और जब मैंने शुरू किया था SOAS में, मेरी इच्छा थी कि मैं रामचरितमानस पढूं। और फिर पता चला कि नहीं, मैं सीधे उस पे नहीं जा सकता। पहले जो मॉडर्न स्टैंडर्ड हिंदी, फॉर्मल हिंदी, वो मुझे करना होगा। फिर मुझे सेकंड ईयर में इंट्रोडक्शन टू मेडिवल हिंदी करना पड़ेगा, और फिर तीसरे साल में जाके ही मुझे रामचरितमानस पढ़ने का मौका मिलेगा। So I had to go through the various steps to develop my language in order to, get to that sort of point कि मैं रामचरितमानस पढ़ सकूं। हाँ। आपके दिमाग में कोई बड़ा फ्रेमवर्क है, लाइक एनीथिंग दैट यू थिंक, लाइक समवन लेट्स से दे आर गेटिंग स्टार्टेड जस्ट नाउ, दे स्टार्टेड लाइक एन ईयर अगो, like if you have to deconstruct this language learning process into smaller sort of framework, what, like आप क्या suggest करेंगे? How should they start? Should they start with
the writing first, or like, as you said, like as a kid you absorbed everything, right? Or do you think the immersion method works better? Like, what is it? Or is it a combination? What's the sweet spot? So yeah, in terms of, processes and, theories of language learning, there's so much research that has been done on that. But then there are so many, individual factors about every student, and no one does it in the same way. So there isn't really, necessarily an answer that fits all. But, very generally, how I approach things in my teaching are, if it's an absolute beginner's student, now, they come with their own motivation, their own reasons for wanting to learn Hindi, whether it be traveling to India, whether it's family, jo bhi ho. And I start with basic oral communication sentences, and just dive in, start off saying, what is your name, where are you from, where you live, they sound like, basic structures, but there's quite a lot in there. मेरा नाम नरेश है, मैं लंदन से हूँ, मैं यूके से हूँ, मैं लंदन में रहता हूँ. You already are seeing the word order, you're seeing postpositions, you're seeing a verb structure. And that's the kind of thing that I start off with. Just dive in. And then things like, script come gradually. I think one generally tends to have that motivation to be able to speak and communicate in the language. And then, साथ में script भी पढ़ाते हैं. And yeah, again, it really depends on a student and what resources are available to them. So, for example, if I talk about me as a language student, I'm very impatient. मुझ में सब्र नहीं है. So when I had an opportunity to learn Spanish in Central America, immersion situation में, तो मैं वहाँ गया, 5-6 हफ्ते वहाँ रहा, स्पेनिश की क्लासेस डेली हो रही थी. 2 हफ्ते तक मैंने इंटेंसिव स्पेनिश किया, फिर 2 हफ्तों तक थोड़ी सी यात्रा की, वो स्पेनिश को इस्तेमाल किया, फिर 2 और हफ्ते मैंने इंटेंसिव स्पेनिश लिया. So this was like a really fast, accelerated way to develop the language and be in that immersion environment. But it depends on your what resources you have available. So now, for example, I don't have the luxury to go to Japan and immerse myself. Maybe next year, let's see. So I'm doing classes, weekly classes, step by step. And yeah, so it really depends on what you have available to you. But the immersion situation, I think, is very helpful. As you said, being surrounded by the language, hearing it, speakers, film, TV, etc. But if we can't go into that immersion environment, can we create one around us where we are? And I think you can. So again, it depends on the motivation, it depends on the time. Resources, we all have access to the internet, and there is so much stuff out there. And I want to give you the example of a student who joined one of our Hindi classes a couple of years ago at SOAS. They hadn't studied Hindi in any formal capacity before. तो वो वैसे Somali बोलती थी, Somali background थी उसकी, और उसको बस दिलचस्पी थी हिंदी में. I think she'd been exposed to some Hindi films or music and was just so interested in learning it. तो उसने खुद कुछ resources लिए इंटरनेट से, पता नहीं शायद हिंदी यूनिवर्सिटी में भी आई थी, I don't know, possibly. And then watching YouTube clips, hearing interviews, उसने फिर mimic करने की कोशिश की. So by the time she came to me, she already had a really good communicative competency, and now she wanted to take it, to the next level and develop more literacy, read wider. But that was just, an amazing example of someone जिसने self-study से
भाषा को इतने ऊंचे स्तर तक सीख लिया था. So yeah, immersion, if it can be mimicked, that sort Yeah. of near immersion or fake immersion, just Yeah. listen to Hindi media, just watch Hindi. Yeah. So I picked up some of the things from all the examples you gave. One, the additional things you mentioned is like discipline and routine. Like तो वो भी language learning process में very important. Like you mentioned about going to Central America, right? तो आपका एक discipline था कि आपने एक्सीलरेटेड प्रोग्राम लिया, फिर प्रैक्टिस करी, फिर वापस गए प्रोग्राम के अंदर, राइट? आपका डिसिप्लिन था, है अभी भी, जो आपने जापानीज पिकअप करने की कोशिश करी, लाइक, एंड यू एस्पायर टू गो देयर. सिमिलरली द सोमालियन स्टूडेंट एक डिसिप्लिन, एक रूटीन रहा, राइट, एंड दैट काइंड ऑफ केप्ट देम गोइंग. So it's extremely important for any new learner or existing learner, right? ऐसा नहीं है कि आपने थोड़े टाइम बोला फिर बहुत लंबा ब्रेक ले लिया, चाहे थोड़े थोड़े टाइम के लिए ही बोल रहे हैं, राइट? और वो अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर लिंगो ऑन अ डे टू डे बेसिस. सो that's extremely insightful that you mentioned there. A couple of questions that came is like, जब आप कोई भी नई लैंग्वेज सीखते हैं, आपकी वोकैबुलरी शायद इतनी ज़्यादा, जैसे मैंने भी जब इंग्लिश अच्छा पिकअप करना किया था तो मुझे सारे वर्ड नहीं आते थे, और मेरी वोकैबुलरी इट वाज जस्ट अराउंड लाइक 200-300 वर्ड्स दैट आई वुड नो, राइट? आपने इसको कैसे हैंडल किया? लाइक डिड यू एवर फील दैट मेरी नेटिव स्पीक लैंग्वेज जैसे पंजाबी है, राइट? तो वोकैबुलरी वर्ड जब इतने नहीं थे तो आपको क्या लगता, शर्म आती थी, या आपने उसको कैसे हैंडल किया? Um, Ajbi, my vocabulary is limited. There's so many words out there. I might read something, तो मुझे उस बात समझ नहीं आती, कोई शब्द समझ में नहीं आता, या कोई क्लास में स्टूडेंट पूछता है कि इस शब्द का मतलब क्या है. I don't always know the answer. So I'm still on my own language learning journey, and I think that's a common theme for anyone who's learning a language. It's an ongoing process. And मैं यहाँ UK में बड़ा हुआ, so I wasn't surrounded by Hindi. I've had limited option to be in that immersion environment, at that early stage. I suppose, बचपन में in West Africa, there was a kind of semi-immersion. But yes, vocabulary, there are things that one can do. So again, it depends on learners, learning styles, what works for you. So as a teacher, I recognize that everyone is an individual and does things in different ways. My job, I feel, is to present tools and resources and say, you can try this, try this, and see what works for you. So, I remember when I was learning Spanish, I spent some time doing the sort of, memorizing words and, using flashcards. And there are various theories around that which say, okay, you do that process and you might retain a certain percentage of the words, not all of them. And so I thought, try करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं, तो कुछ शब्द याद आ जाते हैं. आप कुछ जब इस्तेमाल करते हैं, फिर वो ज़्यादा embed हो जाते हैं. So I think the trick is learning and then using. And then the other thing is, if I refer to one of Rupert Snellji's resources, the Glossaries Alive, उसके बारे में आपने सुना होगा. I'm sure your students have come across that. It seems to be in a repository now. It was on the main page of the Hindi Urdu flagship page, but it seems to have moved. But it's a brilliant resource. मुझे लगता है क्योंकि you see words in relation to other words. So rather than just learning, naam, you learn mera naam. So you already have that sort of like gender clue in there, and you build that sort of link between mera and naam. But I mean, that's just one very basic example. But
So learning words in context. And then आजकल मैं अपनी एक sort of intermediate middle upper intermediate level की क्लास है तो कुछ हफ्ते पहले मैं भारत गया था तो मैं वहाँ एक हफ्ते के लिए था तो उनके लिए मैं कुछ मैगजीन्स वापस लाया so some gifts for the students जैसे India Today हिंदी में India Today Outlook कुछ current affairs political फिर कुछ general interest जैसे सरिता और कुछ cooking and one children's magazine तो मैंने सबको एक एक मैगजीन दिया और कहा अच्छा ठीक है now I want you to read something and present on it तो ये कुछ हफ्ते तक हमारा चल रहा है कि सब विद्यार्थी एक आर्टिकल लेकर उसको पढ़ के उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति 5-6 मिनट के लिए देते हैं and reusing some of the vocabulary that they have read so recently someone was reading about India Qatar relations पता नहीं कुछ क्या हुआ था मैं भूल गया हूँ कि वो I think some Navy officers, right? Some, the Navy officers वो उनको रिहा कर दिया गया है stuff like that and then there's the the Maldives issue which has been going on for a little while वो भी उसका कुछ जिक्र था so using the vocabulary that they have read and to consolidate so these are things to think about but it's using the yeah, vocabulary हाँ yeah. That's ये very मेरी बात important. है That's a good one actually. That ये हम लोग भी जरूर आपकी inspiration से like we will try this method in Hindi University as well to pick up some current affairs और जो article में vocabulary use करी है उसी को ही reuse करके simple तरीके से कैसे present कर सकते हैं एक summary के लिए. So that's a pretty good idea actually. That's So, yeah, but it doesn't have to be, heavy topics like, on international relations. Then another thing is songs, Hmm. Gane. So, everyone enjoys listening to a beat. And if you're learning Hindi, then, you automatically almost have an interest in Hindi learning songs. I'm generalizing, maybe everyone isn't. But, in my class, I'll do different things. So nowadays, you get a lot of songs on YouTube which have the lyrics coming Hmm. up. Hmm. So recently there was पता नहीं हमारी क्लास में कुछ बात हुई थी कुछ addiction की बात हो रही थी तो हम बात कर रहे थे what are the words for addiction to be used to something तो आदत आदि और लत Hmm. ये शब्द आया था सो उससे मुझे याद आया एक गाना है कुछ साल पहले रेस 2 फिल्म का गाना है उसमें जैकलिन फर्नांडिस और सैफ अली खान वो डांस कर रहा है उसका अगर आपने कभी सैफ अली खान की कोई डांस देखा है आपको पता होगा कि बहुत अकड़ के काफी स्टिफ डांसर है लेकिन वो तो दूसरी बात है तो एक गाना था लत लग गई मुझे तेरी लत लग गई तो ये this kept on flashing up on screen with various other vocabulary items as well. तो उससे थोड़ा सा वो collocation का भी पता चल गया है how do you use lat in a sentence तो मैंने स्टूडेंट्स को कहा ठीक है आप ये देखें कि ये क्या कह रही है क्या गा रही है what's the structure x को y की लत लग जाना and so थोड़ा सा वो vocabulary के साथ एक structural usage की बात भी हो गई and yeah songs is a really fun way I think and इसी बात if I could just labor the point a little bit on the songs कुछ हफ्ते पहले मुझे एक मौका मिला था विश्व हिंदी सचिवालय के एक मीटिंग में जाने का and there was एक प्रोफेसर थे उनका नाम मैं भूल गया हूँ शायद डॉक्टर विजय कुमार मैं मिश्रा शायद थे तो उनकी एक वेबसाइट है हिंदी learning edutainment so education and entertainment uska मैं have you come across that I have come across that, yeah. great because there's some amazing resources उन्होंने songs की बात की so there are some amazing presentations that are open access and I thought that was a brilliant resource for
Yeah. vocabulary building, but also grammar consolidation and you know, cultural input through the songs as well. So, you know, a really nice resource to use. पैटर्न रिकग्निशन की जो आपने बात बताई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हाउ टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न, लाइक एक्स को वाई की लत लगना, राइट? लाइक Mm. रॉन को सोशल मीडिया की लत लग गई है, राइट? या सो सिमिलरली आई थिंक आपकी बुक भी जो है, लाइक रूटलेज वैल्यू, उसमें काफी सारे पैटर्न्स बताए हुए हैं, राइट? एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज यू आर लर्निंग द लैंग्वेज, हो सकता है कि शायद हर चीज की ग्रामर बोलते समय याद न रहे, या इट्स वेरी हार्ड टू जस्ट, बिकॉज अगर आपका पूरा फोकस ही ग्रामर पे है, देन यू आर नॉट एबल टू simultaneously focus completely on what you're speaking, because you're consciously thinking about like इसका ग्रामर में सही यूज कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बट जो आपने बताया पैटर्न रिकग्निशन, once you start knowing the pattern, then it start coming like seamlessly, राइट? अगर मैं भी अपनी इंग्लिश को बहुत ही कॉन्शियस तरीके से बोलूँ, वेदर आई एम यूजिंग ऑल द राइट ग्रामर रूल्स और नॉट, प्रॉब्ली आई गेट सेल्फ कॉन्शियस, शायद मुझसे अच्छे से निकले भी नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग इट। I'll take a slight tangent. Some questions came about like should the Hindi versus Mishrit Hindi. We also heard from Professor Snell. Want to hear your thoughts also. Where do you stand, and is there a balance that you try to make? Um, Uh-huh. Yeah, अच्छा सवाल है. Should Hindi versus Mishrit Hindi? So it's about yeah, it's I think it's important to know both. mm, And if you know, in my class, students are studying Hindi in a formal context, and so I highlight, you know, there are all these registers in Hindi. We have the Shuddh Hindi, we have the sort of, you know, Persia-Arabic register, then we have, you know, English words, then there are various varieties of Hindi, you know, you go east, you go south, different styles. So there's, you know, it's such a broad language, so many variations. What do you learn? Where do you, you know, where do you focus? And it's good to be aware of Shuddh Hindi, um, but also be aware that, you know, there are certain contexts for using it. And I, you know, it really depends on what your aim is, what your goal is. If your goal is to be able to communicate, go into the world, speak with people in, you know, India or in your local community with Hindi speakers or with family, then Mishrit Hindi would is, you do. know, it's that's really the real Hindi that people speak. Hmm. Um, you know, so you know, I'm not strict. I'm not one of those sort of like purist types that nahi, should Hindi, modern standard Hindi only. Hmm. And even in, you know, grammatical features, people say aap kaise ho, Hmm. um, maine wahan jana hai, mere Hmm. ko, these type of features which some might consider as grammatically incorrect. I highlight them and I say, you know, this is real Hindi. लोग Hmm. ऐसे बात करते हैं, तो ये मुझे, मुझको, मेरे Hmm. को वो चाहिए, मेरे को वो पसंद है. It's Hmm. so common now. आप भारत जाएं तो it's you know, people from all parts of India use that. Educated people who have not been educated in Hindi, it's so common that I think it's going to become the third option of mujhe and mujhko officially. Yeah. मेरे Huh. को And so, you know, I say, yeah, this is how people speak Hindi, and it's not incorrect. That's yeah. my view. But then I know others who would really sort of frown upon even "aap kaise ho?" नहीं Hmm. नहीं ऐसे बात नहीं करना, "आप कैसे हैं?" But it's so common out there कि लोग कहते हैं "आप कैसे हो?" that, you know, you can't say that it's wrong when something becomes so current and so, you Yeah. know, uh, so used. Languages change, and yeah, I think that's Slightly on the humorous side, when you are surrounded by other Hindi professors, जब आप बड़े-बड़े फोरम में जाते हैं, तो do people argue and debate about it कि आपने सही नहीं बोला, वापस बोलो ये? नहीं नहीं,
वैसे forums में तो मैं शुद्ध हिंदी ही बोलने की कोशिश करता हूँ. So like not even कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ. So it really depends on which context I'm in. But yeah, generally, yeah, I think, it's good to be aware of all of them, and it's having that knowledge, but also then making, your choice as well. Mm. Yeah. Mm. But also, this reminds me of the same website, the edutainment one, Yeah. where Professor Vijay ने कहा कि जब आप कुछ structures सीख रहे हैं, Mm. then you can learn the structures with English vocabulary. So Mm. rather than necessarily using the Hindi word all the time, if we just have a look at a simple example, like where, what do you do? आप क्या काम करते हैं? Mm. Or मैं, uh, I'm, what is your profession? Yeah. If we're, taking us to that basic level, we're just learning the structure. So we don't Yeah. necessarily need the added, the added pressure of the vocabulary that we need to know the Hindi word for teacher or, I mean, zyadatar to professions English mein hai, doctor, engineer. But yeah, Yeah. we can use English words, and people do use a lot of English words in Hindi. So that reminds me of another song, Baby Ko Base Pasand Hai. So learning the Kopasand structure, and we're just using baby, bass, as in bass music, Baby Ko Base Pasand Hai. Then we can start adding more Hindi vocabulary into Yeah. किसी को ये चीज पसंद है वगैरह. So yeah, Mishrit versus Shuddh, they have Yeah. their place. Yeah. So I'm sure plenty of students they have questions as well. So I encourage all of you to write down your questions. I'm going to read one by one. In this case, Jackie G, you want to? I'm going to add to you as well on the. So Jackie G, feel free to unmute your just tell your name, where you're from, and your question. नमस्ते जी, मेरा नाम जैकी है। मैं न्यूकासल अपॉन टाइन में रहती हूँ। अच्छा, न्यूकासल, हाँ, काफी दूर है मुझसे यहाँ लंदन में, लेकिन इतनी दूर भी नहीं है. एक ही देश है. Oh, it's good to meet you, and yeah, Newcastle is not too far in the bigger picture where we have people, from US and wherever. So we're neighbors. हम पड़ोसी हैं. practically. Yeah, your हाँ. question, Jackie G. So yes, everything you've said's been so interesting and struck so many chords, especially with the flashcards. Ah. And I find I can remember some words without any effort, and I don't even know how I remember them. An obscure word, some of them, and then something like "How old are you?" I'd write it out a million times, and then today I was testing myself, and poof, it's gone again. So I Wow. wondered, when you were learning Hindi, were there certain words or things that you found difficult until the light bulb moment, and other words that were just there magically? Thank you. I can't think of anything as, your particular example, which is a really good, an example, a really interesting point. First of all, amazing that you can retain a lot of vocabulary from the flashcards. But yeah, that's a very, interesting and unique situation. I've not come across anything like that where some of the day-to-day stuff, as you said, meri umar kya hai or whatever might go over you. I don't know what I can suggest, but it reminds me of a situation that I was in when I was a student, and because I'd been exposed to all of this, Ramcharitmanas type of formal vocabulary, and there was a situation in my Hindi class, and Rupatji was the teacher, and he asked the question about, we were talking about something, the word enemy came up. Does anyone know the word for enemy? And the day-to-day word that we use in Hindi is dushman. And that did not come into my head. The first word that came was the very formal shatru.
And kind of tying in with the Shuddh versus Mishrit question as well, Ashutoshji. So yeah, I had this formal Hindi stuck in my head rather than the day-to-day, but I don't know how I alleviated that. I think it was just time, exposure, usage. So yeah, just putting it into practice. Everyone you meet, ask them their age and tell them yours. And tell them a different age each time as well. That way you get to practice different numbers. Yeah, good idea. Yeah. Thank you. Dhanyavad. Next question I have Dhanyavad. is from Kelly G. She is based in Berkeley, California. Her question Ah, is, how do you help? There is a background noise, that's why I'm not putting her on the screen. But amazing person. She's been with us for many years. How do you help students with the pronunciation, especially the and the? oh gosh. Those letters are really tricky to get right. And yeah, especially the flapped ones, the retroflex flapped ones, like in ladka and padna. Yeah, it's again, it's a practice thing. But then there's also the question of how accurate does the pronunciation need to be? If we think about, when you're using that word in context, if you got the r and the pronounced it slightly like a r or a d, preferably more like a r, it's not going to hinder communication. And it's like one of those things when learning, Spanish and trying to roll your R's, the r sound, and other, in other languages as well, various sounds. Sometimes that, it's not something that one can do. The rolling the R's thing, I've seen some tutorials on YouTube, but it's quite a process that one needs to go through. But with the d and the r, I haven't got a solution to that. And it's about trying, about knowing where to place your tongue. So when it comes to pronunciation in general, the things are to do with where your tongue is, then the aspiration. But then when it comes to vowels, short and long vowels, so those are the sort of like three things that I draw attention to. But retroflex sounds, the r and the d and the r are really tricky. So I think I don't know, Ashutoshji, being here and interacting with you and the Hindi university community. I want to ask, do you have sessions where students share their experiences as well? Yeah, they Yeah, you do. do. Yeah, yeah. Um, So, to give you an idea, we have over 10 plus practice sessions throughout the week. So, in uh-huh. addition to the Sunday class, there's a whole WhatsApp and Discord community, and then उनका routine publish होता है हर दिन अच्छा, अच्छा. डिफरेंट टाइम जोन। तो वहाँ पे आपस में एक दूसरे को भी सिखाते हैं, सीखते भी हैं। और एज फार एज एक अपनी खुद की जर्नी शेयर करने वाली बात है, वो Mm, Sunday की क्लास में वो हम डेफिनेटली ऐड करेंगे। वो प्लान भी है कि जैसे आप आए हैं, स्टूडेंट्स भी आएंगे और अपनी अपनी जर्नी शेयर करेंगे। तो वैसा भी जरूर जरूर से करेंगे सर, इफ दैट्स व्हाट यू मेंट। uh-huh. So, yeah, it's an opportunity to get input from everyone. How did you learn to pronounce the retroflex sounds, for example? And something that someone else has done might work for you. And I would love to know as well, then I can share it with my students. Yeah, Yeah. awesome. Next one we have is Theresa ji. She is based in Singapore. Her time zone right now is quite like she's probably past midnight. So I'm not going to put her on spotlight, but her question is, she's watching mythology shows which are Shuddh Hindi. Oh, yes. Since you're writing a book on Hindi Urdu grammar, how different is the grammar of Hindi Urdu with Shuddh Hindi? Uh-huh. Okay. So when it comes to Shuddh Hindi, my view is that it's more of a question of register of the vocabulary, but the grammatical structure is pretty much the same. So there is not that much difference between the
the basic grammar of Hindi and Urdu, hence being able to combine them both in one volume. There are some variations, some differences in usage, but the mythological dramas, at the moment, I think the Ramayana, there's a new version of the Ramayana out, and I've seen a few episodes of that, and the language is just amazing. It's almost like a different language because of the vocabulary. But if you took all of that Shuddh vocabulary out and replaced it with Mishrit Bhasha or English type of Bhasha, it would still be the same structure. So but that is something that didn't come to mind earlier, Ashutoshji, when you asked about the Mishrit versus Shuddh. So for being able to appreciate that kind of a drama, that's a different register of Hindi, and very, beautiful language, the vocabulary, the types of words that they use, the formality, a really formal style of language. In the same theme, sir, we have a student, Mahaji. She is from Tunisia. So I'm gonna, add her as well, and she's gonna ask her question herself directly. Mahaji, namaste, कैसी हैं आप? नमस्ते जी, और बहुत बहुत शुक्रिया ये सेशन के लिए, और आपका स्वागत है फिर से। शुक्रिया। मेरा मातृभाषा अरबिक है, तो इसलिए उर्दू मेरे लिए मतलब हिंदी से ज्यादा आसान है। तो कुछ हफ्ते से पहले मैं उर्दू सीखती थी। कोई स्पेशल क्रिया है जो अरबिक क्रिया है, फ़ेल मुज़ारा। मैंने अचानक आई फाउंड दैट फ़ेल मुज़ारा भी होता है उर्दू में, लेकिन हम जानते हैं कि उर्दू हिंदी में वही ग्रामर है, लेकिन उर्दू टर्म्स अरबिक से लेती है कुछ टर्म्स, मतलब, लेकिन हिंदी में संस्कृत टर्म्स होती है। तो ये फ़ेल मुज़ारा वो क्रिया जिसमें वर्तमान और भविष्य काला एक साथ पाए जाते हैं, और वही है अरबिक में दोनों। मतलब हाँ, प्रेजेंट जैसे जैसे। और आई वाज वंडरिंग क्या इस क्रिया भी होता है हिंदी में, और कुछ उदाहरण हैं, जैसे वो कहे तो मैं बात करूं, या दर्जी सूट सिए तो मैं पहनूं, या आमिर आए तो हम जाए। मतलब वो प्रेजेंट भी होता है, फ्यूचर भी हो सकता है। हाँ, तो माय क्वेश्चन इज, डिड यू एवर मतलब सी और हर्ड अबाउट दिस क्रिया इन हिंदी, या सिर्फ उर्दू इमिटेट करना चाहते हैं अरबिक स्पेशल वर्ब, तो ये बनाते हैं ये फ़ेल, ये मतलब क्रिया। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो सेंटेंसेस आपने कही हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो दोनों उर्दू में चलती हैं और हिंदी में भी चलती हैं। हाँ, तो फर्क नहीं है हिंदी उर्दू में, शायद टर्मिनोलॉजी में फर्क हो। ये जो टेंस है, इन इंग्लिश आई वुड कॉल दिस द सब्जंक्टिव, हाँ जी। तो वो हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भी, लेकिन actually the terminologies that we're using in the grammar book are English terms, लेकिन अब आपने अभी ये मुझे आइडिया दिया है कि शायद हमें उर्दू के और हिंदी के जो ग्रामेटिकल टर्म्स शायद एक अपेंडिक्स में हम डाल सकते हैं। सो थैंक यू, एक छोटा सा और लाइट बल्ब मोमेंट हुआ है मुझे आपके हाँ, वजह क्योंकि से। हाँ, थैंक यू फॉर टर्म्स, दैट। हाँ जी, टर्म्स उर्दू में जैसे मुअन्नस बोलते हैं, तो हिंदी स्त्रीलिंग बोलते हैं। वो जी, स्त्रीलिंग भी हिंदी नहीं है, वो संस्कृत है। संस्कृत से, मुअन्नस अरबी भी से कोई आया उर्दू है। अरबिक से आया है, तो क्योंकि इसलिए हाँ। हाँ सो जी। हम बात कर रहे थे शुद्ध हिंदी की। सो जो शुद्ध हिंदी की शब्दावली है, वो ज्यादातर संस्कृत से प्रभावित हुआ है, और उर्दू में अरबी और फारसी से शब्द आते हैं। तो इसलिए क्योंकि आप अरबी जानती हैं, आपके लिए उर्दू बहुत आसान होगी, आप पढ़ भी सकती हैं। सिर्फ कुछ अक्षरों में फर्क है, जैसे ज एंड द एंड
these type of things. लेकिन वो आसानी से आप सीख सकती हैं. But when you said about using the present tense for a future, मेरे दिमाग में आया था कि हम जैसे कहते हैं हम कल मिलते हैं. Yeah, मिलते हैं present tense, but we say इसका मतलब है we'll meet tomorrow, यानी future action. तो हम present tense को future के लिए इस्तेमाल कुछ स्थितियों में कर सकते हैं. कल मिलते हैं, or we could say कल मिलेंगे, but yeah, usually for an immediate future, present tense भी चलता है. But yeah, your अच्छा सवाल है, मुझे बहुत अच्छा लगा. और उदाहरण बहुत अच्छे दिया आपने. शुक्रिया जी. ये खासकर ये सवाल खासकर मैंने रख दिया क्योंकि अच्छा. सिर्फ आप आप ये सवाल के जवाब दे सकते. धन्यवाद जी. Next one, we have Professor Anita. She is a professor of language herself. I'm going to put you on spotlight, Professor Anita. Briefly about yourself, where you're from, your question. मेरा नाम अनीता है, मैं स्विट्जरलैंड से हूँ, मैं मिशिगन में रहती हूँ. I have a much more simple question for you than before. I'm interested in knowing if you consider it to be an advantage having had to learn Hindi for being an instructor at the university level versus being a native speaker. I don't know if it's an advantage or not. I think what is useful is having learnt a language from scratch, whether it's Hindi or any other language. So, for example, I was a bit of a kind of halfway. I kind of knew Hindi, but then I studied it and I didn't really learn the grammar in order to use Hindi. I had to learn the grammar in order to teach it. And, that's been an ongoing process. I'm still coming across interesting and really sort of tricky little grammar points that, I'm fascinated by grammar. Students ask me grammar questions, I love it. So, and I don't always know the answer. That means I have to research and, it increases my own knowledge. So grammar is, one of my bedtime reading type of things. And yeah, it's good for, insomniacs. It'll put you to sleep as well. So it has two purposes that way. But I think it's good to have experience being a language learner. So now, जैसे आपको पता है, मैं अब जापानी भाषा सीख रहा हूँ. So I'm back in the classroom and having to learn structures and know what it feels like, number one, to be a student, but also going through that process of having to, do all of the steps that it takes to acquire the language. So I think that's possibly useful. Whether, I don't know if that sort of like answers the question. But the other advantage of having been a student or being a language student, every now and again, being a language student, you get to see what other teachers are doing, and you can, get some inspiration from that. New techniques, different things that you haven't tried. So for me, it's a double bonus being a language student. As you mentioned, our students do expect us to be walking dictionaries, so that isn't it? But even in our mother tongues, we can't always immediately pull out the right translation, isn't it? So. Yeah, that's a really interesting point as well, because sometimes someone says, oh, how do you, what's the word for this? Or how do you translate this? And, immediately you try and do a kind of a word for word translation, which doesn't sound natural necessarily if you translate it into Hindi, and then you think, actually, we say it in a different way. I can't think of an example right now, but you're like, oh, one doesn't say that. So it takes you an extra step when someone says, oh, how do you say that? Or what's the translation for that? Yeah. Thank you so much, Anita ji. The next one we have is Professor Claire. She's also based in the UK. I'm gonna bring her in the spotlight as well. So, Professor Claire, it's you. Briefly about yourself. Namaste, Claire ji. कैसी हैं आप? Namaste.
Pati ko shukriya मैं योग विश्वविद्यालय में साहित्य पढ़ाती हूँ और मेरा सवाल भी साहित्य के बारे में है अच्छा इंटरमीडिएट विद्यार्थियों के लिए कौन सी किताबें हमारे लिए उपयोगी होती है जैसे मेरे लिए जब मैं आधा घंटे के ऊपर पढ़ती हूँ तो मुझे सर दर्द होते हैं so मैं किताबों ढूंढ रही हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है मजेदार है मनोरंजक वगैरह अच्छा साहित्य के लिए अम, अच्छा साहित्य के लिए अगर आप ऑनलाइन जाएं तो कुछ साहित्य की कुछ जैसे कहानियां मिल सकती हैं तो मेरे दिमाग में आ रहा है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होती थी फ्रांसिस प्रिचेट तो उनका वेबसाइट अगर आप फ्रांसिस प्रिचेट को गूगल पर देखें उनका वेबसाइट आपको आसानी से मिल जाएगा तो एक सेक्शन है उनके वेबसाइट पर द ग्रेट ग्लॉसरी फेयर तो उसमें बहुत से प्रोफेसरों ने बहुत से शिक्षकों ने अपलोड किए हैं like word lists for particular stories or short stories etc so the advantage of that is that you are not then spending hours looking up words in a dictionary as well so tackling some classical literature from that the other thing is the Hindi reader that I've done with Professor Bhatia, it has a few literature items in it. And if you drop me an email, if you haven't got it, drop me an email and I can send you some of the chapters of the literature items for you to read, and there's a vocab and a little bit of a blurb about them, some little short stories and things. So that's some initial steps possibly. मुझे राइट लिटरेचर बहुत पसंद है सर मैं जरूर ईमेल लिखूंगी जी ठीक है शुक्रिया Thank you धन्यवाद so much. So we are almost at time. हमारे सवाल तो बहुत हैं. We want to keep on going, but I want to respect your time and everyone's time. So for folks who watch live on Facebook, thank you so much for watching it. The rest of the session we'll probably just not do it on broadcast. So folks who join using Zoom, they can, if they have any last minute question, they can ask it. Like some people are shy, they don't want to be on the camera. So I want to give that opportunity to the community members who are like more comfortable asking in a closed group. But before we stop the broadcast, anything you want to share, Professor Naresh? So I wanted to mention, first of all, thank you everyone for, joining us. Thank you, Ashutosh ji, for inviting me. And, it's wonderful to talk about Hindi teaching and learning with you and with students as well. And it's a two-way process. I get to learn and understand from students and from other teachers. And I want to say that there's a really good book out there that I've seen which covers things in a very good sort of like structured way. It's called Pingu Learns Hindi. Please do. And what I found, very interesting as well was at the end of the book, the comments of students, because my belief philosophy is that as a teacher, it's as teachers, it's our role to provide a structure to answer questions about the language, but also to motivate, encourage students, inspire students when they face obstacles and hurdles to keep them going. And I see what an amazing job that you've been doing, Ashutoshji, from the comments and students saying how you have supported them and encouraged them, and when they face barriers or hurdles you've got them through that. So a wonderful shout out to you for I was that. quite surprised. I didn't know आपने order कर दिया. Thank you so much. Thank you. So we'll stop the broadcast, and the rest of the session is for folks who are like on the Zoom community. So I'm gonna just give me 1 minute, and I'm gonna make sure that rest of the session is with the folks internal. So